तो आज बड़ी खुशी की बात है, इतने सारे प्रोग्राम रहे, उसमें ये विशेष प्रोग्राम है जब काशी भाई ऑस्ट्रेलिया के मुरब्बी बाबा के लाडले बच्चे आए हैं, उनकी चेहरे से ही सेवा होती है। आज बाबा ने कहा न पर्सनालिटी, तो ये भी प्रसन्नता की पर्सनालिटी वाले ब्रदर चार्ली जी हमारे पास आए हैं। हम भी अपनी श्रेष्ठ और नम्र वृत्ति से उनका स्वागत करते हैं, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करें। They are welcoming you. Yeah. So, thank you so much, Dr. Jayant and Manesh Bhai and Savita Ben. It's lovely to be with you today. Yeah, we are also feeling the same. हमको अच्छा लग रहा है हम सबके साथ रहते हुए. So maybe I should ask Savita Ben, if I just speak slowly, you can translate, is okay? Yeah, I can translate even if you speak fast, no problem. Okay. Well, it's really my fortune to meet the family of Vadodara, and Baba was talking today about Gujaratis and how they've gone to all corners of the world. And बाबा ने मुरली में गुजरातियों के बारे में कहा कैसे पूरे विश्व में सब कोनों में जाकर सेवा किया, आप सबसे मिलना मेरा भी सौभाग्य है. And wherever I've been all over the world, the Gujarati family is there, and so the Gujarati family has supported Baba's task in all corners. And विश्व में जहाँ पर भी गया गुजरातियों से मिला और आपने हर प्रकार से बाबा की सेवा में बहुत सहयोग दिया है. You know, I've been with Baba for 45 years and I still don't speak Hindi, but मैं 45 years से ज्ञान में हूँ, लेकिन मैं हिंदी अभी तक नहीं बोल पाता हूँ. When I started my Brahman life, it was in London, and I learned to read Hindi. And once I went to tell Daddy Janki, and I said, Daddy, I've learned to read Hindi. And Daddy told me, waste of time, study Gyan, don't study Hindi. So that was the end of my Hindi career. Okay, so इनको लंदन में ज्ञान मिला तो शुरू में हिंदी थोड़ा लिखना पढ़ना सीखना शुरू किया और दादी जानकी को बताया कि दादी मैंने ऐसे लिखना हिंदी शुरू किया है. तो दादी ने कहा ये वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम वेस्ट नहीं करो, ज्ञान को अच्छे से स्टडी करो, हिंदी को नहीं. So I was asked today just to share a little bit of perhaps my experiences. And if there's a little bit of time, if you want to ask me anything, that's also more than fine. And I'm going to ask Savita Ben, do you want to simultaneously translate or stop and start? However you feel comfortable, I'm okay with anything. Okay. Yeah. You tell me if I just speak and it's too much, you tell me when to stop. Is okay? Okay. Yeah, that's okay. I'll do that. So just to tell you a little bit about myself, I'm from Melbourne. I grew up in Melbourne in Australia. And, you know, my family wasn't very Christian, but I was sent to the church when I was 12 for confirmation. Okay. And इनका जन्म जो है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हुआ और ये एकदम क्रिश्चियन तो नहीं थे, फिर भी इनके परिवार ने इनको लगभग 12 साल की आयु में चर्च में भेजा ताकि कुछ सीखे उन बातों. And I was just 12 years old, but I went to confirmation and they teach you about the church and their view of God. And maybe I'm just looking at Savita Ben. I'm wondering whether to keep going or stop. 3-4 sentences should be fine. 4 sentences okay. Yeah.
Okay, so इनको इतना like interest तो नहीं था. What do you mean with confirmation? Like what's that? You went to church for confirmation. What is the meaning of? You know, that's like a formal entry into the church. Okay, okay. तो इनको इतना इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन एक जब थोड़ा तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना होता है, इसलिए थोड़ा समझने के लिए, जानने के लिए चर्च में गए. But you know, my family asked me when I was just 12, what have you learned? या इनके परिवार ने इनको पूछा कि 12 साल की आयु में आपने चर्च गए तो आपने क्या सीखा वहां पर. And I said to them, I think I'm an atheist because I found it very hard to accept the Christian God who is very judgmental, authoritarian, and punishing. ओके ओके, इनको लगा कि मुझे बस नहीं हुआ चर्च में जाकर, मैं नास्तिक हूँ ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से वो लोग सिखाते थे थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पनिशमेंट देते थे, इनको अच्छा नहीं लगा वहां पर जाकर. When I left school, I went to Melbourne University to study architecture, but I was searching very strongly. ये मेलबर्न यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की इन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन कुछ तो अंदर से बहुत कुछ ढूंढ रहे थे. So it was you are searching God or just searching something? I was searching for truth. Okay, सत्यता क्या है उसको कहाँ न कहीं ढूंढ रहे. When I was just 20 years old, I traveled the world. I traveled the whole world for a few years. केवल 20 साल की उम्र में ही इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, टूर किया. And I went through Southeast Asia to India, to the Middle East, to Africa, to Europe. Okay, Southeast Asia से इंडिया गए, फिर मिडिल ईस्ट गए, फिर अफ्रीका का भी मैंने पूरा टूर किया. And everywhere I lived in religious communities. That's interesting. तो जहाँ पर भी गए, कहाँ पर धार्मिक स्थान होते हैं ना, वहाँ पर ही रुकते रहे. So that was a religious tour, kind of. Yeah. हाँ, तो मतलब धार्मिकता को जानने के लिए, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेने के लिए ये पूरे विश्व पर भ्रमण करते रहे, और जहाँ भी गए उन धार्मिक स्थानों पर ही रुकते रहे. I live with Sikhs, I live with Buddhists, I live with Muslims, I live with Hindus, I live with yogis, I live with Christians, I live with Chinese religion, Taoism. I had an experience of all the religions. तो ये सिख लोगों के धर्म वालों के साथ रहे, बुद्धिस्ट के साथ रहे, हिंदूज के साथ रहे, और चाइनीज के साथ भी रहे. तो अलग धर्म जो फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ रहे, तो इनको सब धर्मों को स्टडी करने का जैसे मौका मिला. And I settled in London. I was living in London. And I came across the Brahma Kumaris in London. तो ये लंदन में सेटल हो गए, और उनको बाबा का जो परिचय, ब्रह्म कुमारी का जो परिचय लंदन से ही मिला. There used to be a place in London called the Spiritualist Association of Great Britain. And I went along there, and Daddy, Janki, and Genty Ben were giving a talk. Why you went there? You just went to listen to. Why you went to that spiritual association of Great Britain? I was searching. वैसे ही सत्य को खोज ही रहे थे, तो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करके एक स्थान है, वहाँ पर जयंती दीदी, सुदेश दीदी, जानकी दादी तीनों थे, उनका एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में पहुँच गए. And as soon as I saw Daddy and Genty Ben, they were familiar to me. They looked familiar. Their white dress was familiar, and even the Shiv Baba, it looked familiar, like it's something I knew. ये जब जानकी दादी और जयंती दीदी दोनों को देखा, इनको लगा मैं इनको तो जानता हूँ, पर जब शिव बाबा के चित्र देखा और ही लगने लगा ये तो मेरे लिए बहुत फैमिलियर है, मैं जानता हूँ इनको, इससे इनको अनुभव हुआ. So Daddy invited me to come to the center, and in those days the center in London was tiny little center, very little center. The Muli room maybe fit 20 people. It was the world headquarters of the Brahma Kumaris, but so tiny.
तो ये जब दादी ने इनको फिर सेंटर पर बुलाया, फिर ये जब सेंटर पर पहुंचे तो देखा बहुत ही छोटा सेंटर था जहां पर जैसे 20 लोग ही बैठ सकते थे और वो ब्रह्म कुमारी का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स था. And Sudesh Didi gave me the course. I think I was her first course in English. तो सुदेश दीदी ने इनको कोर्स कराया. आई थिंक वो सुदेश दीदी का भी इंग्लिश में कोर्स कराने का पहला ही एक अनुभव है जो इनको उन्होंने इंग्लिश में कोर्स कराया. And straight after I finished the course, I was thinking deeply about Shiv Baba. And it was like I had a vision of Shiv Baba. And it was like I had the experience of the ocean of love filling me completely. And my feeling was, I've come home and this is where I belong. तो इनको बाबा जो प्यार का सागर है उस प्यार से जैसे अपने आप में एक भरपूरता का अनुभव हुआ. इनको ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने घर में पहुंच गया हूं. Then I was coming for just 2 months, and Daddy Jenki said to me, you should go to Madhaban. I think she was worried that I might run away somewhere, so she thought, go to Madhaban before he runs away somewhere. तो जैसे सेंटर पर जाना शुरू किया, 2 माह से इनको हुए थे. इनको जानकी दादी जी ने कहा कि आप मधुबन चले जाओ, क्योंकि दादी को कहाँ न कहाँ थोड़ा सा डर था ये ज्ञान छोड़ के भागने जाए. तो इसलिए 2 मास के बाद ही दादी ने इनको कहा कि मधुबन जाओ. And my first meeting with Baba was in the history hall in Pandav Bhavan. ये पहली बार अपेक बाप दादा से हिस्ट्री हॉल में, जो पांडव भवन में जो हिस्ट्री हॉल है वहां पर मिले. There was maybe 50 meeting Baba at that time, 50 souls. या केवल 50 आत्माएं थे उस समय अपेक बाप दादा के सामने जो बाबा से मिल रहे थे. And when the Muli finished, Baba called us up and I sat in front of Baba and Baba gave me long drishti. तो जब मुरली पूरी हुई अवेक बाप दादा के सामने गए और बाबा ने इनको बहुत ही लंबा दृष्टि दिया. And I had the experience that Baba's drishti was sort of like a laser beam. It went deep into the soul and like scanned all the sanskaras in the soul and fell on the original me, the pure me, the elevated me, like the deity part of the soul. जैसे ही इन्होंने अवेक बाप दादा से दृष्टि ली, इनको अनुभव हुआ कि जैसे बाबा की जो रेस है वो मुझे स्कैन कर रही है और जो मेरे पुराने संस्कार है खत्म होकर के मैं अपने आप को जैसे प्योर देवी स्वरूप आत्मा हूँ, उस अनुभव में अपने आप को अनुभव कर रही हूँ. And it's like Baba's drishti pulled that to the surface and in a way introduced me to who I really was. And I can say from that day, my sense of self-respect changed through Baba's drishti. तो इनको माना इतना अच्छा अनुभव हुआ, जो बाबा की जो दृष्टि थी एकदम गहरा अनुभव, और मेरा जो ओरिजिनल स्वमान क्या है, मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप क्या है, उसको समझने के लिए इनको बहुत ही वो जो बाबा की दृष्टि थी उससे बहुत मदद मिली. Then Baba asked me 2 questions. बाबा ने 2 सवाल पूछे इनसे. I was only 2 months in Gyan and Baba said, do you have one Shiv Baba and none other? तो इनको ज्ञान में 2 मास ही हुए थे, लेकिन शिव बाबा ने इनसे पहला क्वेश्चन पूछा, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये अनुभव कर रहे हैं क्या? I said, yes. गॉड. मैंने कहा हाँ जी बाबा, मेरे दिल में भी एक बाबा दूसरा ना कोई ही है. And then secondly, Baba said, are you stable on drama? And I went, yes. I should have said no, but I said yes. इनको बाबा ने पूछा ड्रामा पर अचल अडोल है, तो भी इन्होंने कहा हाँ बाबा. इनको लगा मुझे ना कहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हाँ कह दिया. And I feel from my first meeting, Baba gave me the gift of self-respect. इनको जैसे स्वमान का ही बाबा से डायरेक्ट जैसे सौगात के रूप में मिल गई, जो बाबा से पहली बार मिले. Once Baba said, to the extent you have self-respect,
you can respect everyone. जैसे जितना आप अपने सम्मान में स्थित रहते हैं उतना आप सभी को सम्मान दे सकते हैं, ये भी बाबा ने उनको अनुभव कराया। To the extent you have self-respect, you will be humble. जितना आप में सम्मान रहेगा उतना आप निर्माण भी रह सकते हैं। To the extent you have self-respect, you will be loving and others will love you. जितना आप में सम्मान रहेगा उतना आप खुद को भी प्यार करेंगे और दूसरे भी आपको प्यार करेंगे। And I would say that's been the main thing I've paid attention to in my Brahman journey, to maintain my self-respect regardless of what happens around me. तो इनको जैसे बाबा ने वो वरदान दिया तो इन्होंने हमेशा लक्ष्य रखा कि मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पूरा ब्राह्मण लाइफ में इन्होंने इसको अनुभव किया। And I often feel there's 4 visions on the soul. इनको जैसे जो 4 आत्मा की जो बातें हैं उनको हमेशा अनुभव होता है। Yes. So Baba said there's 4 visions on the soul. And the first is the vision of the world. And the world will judge and label you in 1 second. ओके जैसे फर्स्ट जो आत्मा का जो साक्षात्कार की बात है, जो पूरी दुनिया है वो आपको 1 सेकंड में आपको जज कर देगी और आपको लेबल कर देगी कि आप ऐसे हो। Then there's the vision of others, and because others lack self-respect, they find it hard to give respect to others. तो दूसरी जो है दूसरों की बात है, जो खुद में सेल्फ रेस्पेक्ट सम्मान की जिनमें कमी होती है वो दूसरों को भी सम्मान नहीं दे पाते हैं। Then there's my vision on me, and I would say this is the biggest obstacle in Brahman life. और तीसरी जो बात है वो हम खुद को कैसे देखते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो विघ्न है जो हमको ब्राह्मण लाइफ में हो जाता है, जो हम अपने आप के प्रति कभी-कभी बहुत लो फील करना शुरू कर देते हैं। Even though I know Baba, I have faith in Baba, I still have a very limited and critical vision of myself. This is still the third one, no? Third one, yeah. माना बाबा भले मुझ आत्मा के प्रति बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ भावना रखते हैं, फिर भी मैं अपने प्रति कभी-कभी बहुत ही कम भावना हम रख लेते हैं ना, तो वो तीसरी बात ये समझा रहे हैं। जी। I put myself in a box of limitation. I can't do this, I have this weakness, I'm not like this. And this is really the biggest obstacle I feel in moving forward in Brahman life. कभी-कभी हम अपने आप को जैसे एक छोटे बॉक्स के लिए सीमित रख देते हैं और सोचने लगते हैं शायद ये मैं नहीं कर पाता हूँ, शायद ये मेरे से नहीं होगा। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा विघ्न है इस ब्राह्मण जीवन में। And then there's Baba's vision. Baba sees me as an angel. Baba sees me as a world benefactor. Baba sees me as an ancestor soul. फिर बाबा की दृष्टि मेरे प्रति कैसा है? बाबा मुझे एक एंजल के रूप में देखते हैं, एक विश्व कल्याणकारी के रूप में देखते हैं, एक पूर्वज आत्मा के रूप में देखते हैं। So Baba says, child, you're an angel. And we say, no, Baba, no, I'm not. You don't know what I'm like. Actually, it's Baba who knows me. It's me who's addicted. It's like an addiction to a negative vision on myself. बाबा कहता है कि आप फरिश्ता हो, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं बाबा आपको नहीं मालूम मेरे में बहुत कमजोरियां हैं, मैं कैसे एंजल हूँ। तो जैसे एक एडिक्शन है जिसमें हम अपने प्रति बहुत ही कम या लो फील करना शुरू कर देते हैं और बाबा कहता है तो भी हम नहीं मान पाते हैं। If I remain stuck in my box of limitation, I would say, have I really recognized who's teaching me? Because when I really recognize the teacher, I step out of this lack of self-respect and step into true self-respect. तो जब हम कैसे सोचने लगते हैं तो इसका मतलब है हम भूल जाते हैं कि मुझे पढ़ा कौन रहा है। जब बाबा कहता है एंजल हो मानते नहीं हैं, तो मुझे कौन पढ़ा रहा है, जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो हम अपने स्वमान को भी भूल जाते हैं।
If I make a mistake, it doesn't matter. What matters is if that mistake makes me lose my self-respect. कभी कभी गलतियां हो भी जाते हैं तो भी कोई हर्जा नहीं, लेकिन उस गलती के वजह से क्या मेरा जो स्वमान है उसमें कमी हो रही है, वो हमको देखना है. If someone criticizes me, it doesn't matter. People will criticize me. But what matters is when people's vision or criticism changes my self-respect, how I feel about myself. या जब लोग हमारे प्रति क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस बात को सुन के मैं अपने स्वमान को कितना मैंने कम कर दिया, वो मैटर करता है, उस पर हमको अटेंशन देनी है. And really, to me, the great gift I feel Baba has given me is to maintain my self-respect, regardless of people, situations, changes. And to me, this is a sign of a Gyani yogi soul. मुझे ऐसा लगता है इसका मैंने बहुत ही अच्छे से अभ्यास किया है, चाहे कुछ भी होता रहे, तो ये जो ज्ञानी योगी आत्मा है, उनकी निशानी यही है कि वो हमेशा अपने स्वमान में रहते हैं. When, after my first visit to India, I went back to London and I was living in London. ओके, तो इन्होंने जब फर्स्ट टाइम मधुबन आए, वापस चले गए लंदन में, तो लंदन में ही रहते थे. And I was very fortunate because Daddy, the three sisters in the center were Daddy Janki, Sudesh Didi and Jenti Ben. ये बहुत ही भाग्यशाली थे क्योंकि इनको इतनी अच्छी पालना भी मिली. जानकी दादी वहाँ पर रहते थे, सुदेश दीदी और जयंती दीदी, तो तीनों का पालना इनको मिलती रही. And wherever they went around London, they would take us. Jenti Ben would drive the car. Daddy would sit in the front. And all the time, if you know Daddy Jenki, she's always teaching. So Jenti Ben had to drive and translate. And we were always sitting in the back seat. Okay. तो जब ये जहाँ पर भी सेवाओं के लिए टूर करते थे यूके के अंदर, लंदन के आसपास, तो जयंती दीदी खुद ड्राइव करते थे. जयंती दीदी के पास जानकी दादी बैठते थे और हम लोग पीछे बैठते थे. तो अब आपको मालूम होगा कि जानकी दादी हमेशा ज्ञान कुछ ना कुछ शेयर करती ही रहती है, तो जयंती दीदी को ड्राइव भी करना पड़ता था और जानकी दादी जो बोलती थी उसका ट्रांसलेशन भी करनी पड़ती थी. And in 1976, Daddy Gulzar went on a world tour. Daddy Gulzar visited every center outside of India. ओके, 1976 में दादी गुलजार ने पूरा वर्ल्ड टूर किया और भारत के बाहर जितने भी सेंटर्स थे, उन सभी सेंटर्स पर दादी ने चक्कर लगाया. And when she was in London, there was one brother there who was a very dedicated brother. His name was Vishnu Bai, but he had a heart problem and he couldn't travel to Madhuban to meet Baba. So he said to Daddy Gulzar, can Baba come and meet me in London? ओके, वहाँ पर लंदन में एक विष्णु भाई था, उसका तबीयत ठीक नहीं था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उसने गुलजार दादी को कहा कि दादी मैं मधुबन नहीं आ सकता हूँ बाबा से मिलने के लिए, क्या बाबा यहाँ लंदन में मेरे से मिलने आ सकते हैं? What does Baba say in the Sakamoli? He says, Baba only comes in Bharat. तो बाबा तो कहते हैं साकार मुरलियों में भी कि मैं केवल भारत में ही आता हूँ. But Daddy Gulzar is so humble. She said to this brother, I will go to Baba, I'll go and I'll ask Baba. वाओ, गुलजार दादी कितना नम्र है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर बाबा से पूछ कर आऊंगी कि बाबा क्या कहते हैं इसके बारे में. And so she went in trance and asked Baba, and Baba said, the children should sit in a yoga bhatti and Baba will see the atmosphere. So Baba didn't say he will come, but he didn't say he wouldn't come. Okay, amazing. तो बाबा ने कहा कि आप लोग योग भट्टी में बैठ जाओ, क्या वातावरण बनेगा मैं उस वातावरण को देखूंगा. बाबा ने ये नहीं कहा मैं आऊंगा, ये भी नहीं कहा मैं नहीं आऊंगा, लेकिन बाबा ने कहा आप भट्टी में बैठो. And so it was in July 1976 and we all sat in a yoga bhatti. And then Daddy Gulzar came in
and maybe 14, 15 people. And Baba, she went in trance and Baba came. Baba came in London. ओके, इन 1976 की बात है, ये लोग भट्टी में बैठ गए, लगभग 14-15 लोग होंगे, गुलजार दादी आए और बाबा सच में गुलजार दादी के तन में आए लंदन में। Great achievement, brother. Great achievement. Yes, it was amazing. And and Baba only came for 15 minutes and he just gave drishti. But what I learned from that was that when you're a dedicated child of Baba, when you're completely surrendered, really God becomes the most obedient servant. या इनको उस सीन से बाबा लगभग 14-15 मिनट तक वहां पर रहे। इनको ये सीखने को मिला कि जब हम सच्चाई के साथ, सफाई के साथ परमात्मा के सामने समर्पण हो जाते हैं, तो बाबा उनके लिए जैसे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन बच्चों के सामने बाबा भी समर्पित हो जाता है। And that brother left his body only a few months later. उस भाई He जो was so happy. विष्णु भाई जो था, उसने फिर शरीर छोड़ दिया, वो बहुत खुश हो गया कि मैं बाबा से मिल पाया। I think the main thing that has really sustained me in my Brahman life is the experience of Baba's love. इनको हमेशा ब्राह्मण परिवार से बाबा को जो प्यार है, उसी के द्वारा बहुत सारी पालना मिलती रही और इसी शक्ति के आधार से आगे भी बढ़ते रहे। When I feel the experience of Baba's love, I feel really content and satisfied. And to me, when I sit in meditation, I sit in front of Shiv Baba and I allow Baba to love me. तो जब भी ये योग में बैठते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जितना हो सकता है मैं बाबा का जो प्यार है वो अनुभव करूं। तो जब योग में बैठते हैं तो बाबा का जो प्यार है उसी का अनुभव ज्यादा करते हैं, उसी को आह्वान भी करते हैं। My experience, when my heart is full of love, I feel very easy, very relaxed, very accepting of others around me and of situations. तो जब इनको ये अनुभव होता है कि जब मेरा जो दिल है वो प्यार से भरा हुआ है, तो दूसरों को और सामने वाली जो सिचुएशंस है उसको एक्सेप्ट करना, इजी रहना इनके लिए सहज हो जाता है, रिलैक्स रहना भी इजी हो जाता है। But when the heart lacks love, the mind can never rest. You know, the agitated mind's always searching, seeking. Something is missing. There's never contentment. And because the first need in life is love, the first desire in life is love. जब प्यार की कमी हो जाती है तो मन इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, कोई ना कोई चीज के लिए इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है। तो एक वो जो अनुभव है, मन हर एक आत्मा को हमेशा प्यार की ही जरूरत होती है। Once I went to Delhi and I stayed with Jagdish Bhai in Shakti Nagar. I think you all know Jagdish Bhai. तो इनका एक बार दिल्ली जाना हुआ, वहां पर जगदीश भाई के साथ ये रहे। मैं समझता हूँ आप सभी भी जगदीश भाई को जानते होंगे। And I said to Jagdish Bhai, can I talk to you? And he said, I'm very busy. He said, I've only got half an hour. But we talked from dinner time until midnight, 5 hours. तो इन्होंने जगदीश भाई से पूछा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो जगदीश भाई जी ने कहा कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास आधे घंटे का टाइम है। तो ये लोग शुरू किया और बात करते 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 और रात को 12 भी बज गए और पता भी ना चला। And Jagdish Bhai said one thing I've always remembered. He said, the cycle is a love story. ओके, इंटरेस्टिंग। तो इनको हमेशा वो एक बात है, वो अच्छा लगता है। जगदीश भाई ने हमेशा कहा ये जो साइकिल है, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, सृष्टि चक्र जो फिरता है, ये एक लव स्टोरी है, प्रेम की कहानी है। The golden age is a world of divine love. जो सतयुग है वो एक देवी जो प्यार है, उसकी दुनिया है। But when we come to the copper age, it's not that we stop loving, we just love the wrong things. जब हम द्वापर युग में पहुंच गए, ऐसे नहीं कि हमने प्यार करना छोड़ दिया, लेकिन हम गलत चीजों
हमने प्यार करना शुरू कर दिया. When I love my own body, it becomes ego. When I love the bodies of others, it's lust and attachment. When I love material things, it becomes greed. All the vices are as perverted forms of love. माना जब मैं अपने ही शरीर को प्यार करने लगता हूँ वो अहंकार हो जाते हैं, दूसरों के शरीर को प्यार करते हैं तो वो विकार है, कोई भी चीजों को हम प्यार करते हैं तो वो लोभ हो जाता है. माना प्यार का ही एक अलग तरीके, गलत तरीके से हम फिर द्वापर युग से अपने खुद के शरीर को, दूसरों के शरीर को, व्यक्ति, वस्तु, वैभवों को प्यार करना शुरू कर देते हैं. When Baba comes, he comes to educate us how to love accurately, what is true love. जब बाबा आते हैं वो यही सिखाते हैं सच्चा प्यार क्या है, कैसे सच्चाई से हमको प्यार करना है, ट्रू लव क्या है, वो बाबा हमको संगम पर सिखाते हैं. Once Baba said, true love is loving that which always exists. जब एक बार बाबा ने कहा सच्चा प्यार माना वही है जो अविनाशी है, जो हमेशा रहता है, उससे मुझे प्यार करना है, वही सच्चा प्यार है. So Baba gives us this incredible education to transform our love from physical to spiritual. जो बाबा जो शारीरिक प्यार है उसको कैसे हम रूहानी प्यार में परिवर्तन करें, वो एक बहुत ही विशेष ज्ञान हमको बाबा देते हैं. From temporary to permanent. जो विनाशी है, टेम्पररी है, उससे कैसे हम अविनाशी या परमानेंट, हमेशा जो रहने वाली है, उससे मैं कैसे प्यार करूं, बाबा हमको सिखाते हैं. From love based on emotion to love based on truth. जो भावनाओं से कनेक्टेड हमारा जो प्यार होता है, तो जो सच्चाई है, ट्रुथ है, उसके साथ मेरा प्यार हो, बाबा हमको वहां तक ले जाते हैं. And I really feel all I have to do is love the right things and I will become completely pure. जो सही चीजों को अगर हम प्यार करते हैं तो हम संपूर्ण पवित्र बन ही जाते हैं, ये मेरा विश्वास है. Yeah, amazing. And Banesh Bhai, he said to me to share a few things of my experiences with the daddies as well. क्योंकि मनीष भाई ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि दादियों के साथ का भी आप अपना अनुभव शेयर करें. And you know, there's so many things I remember, but I was remembering Daddy Ji especially because coming up to August is Daddy Ji's month. तो बहुत दादियों की इनको पालना मिली है, लेकिन अभी अगस्त का महीना आ रहा है तो दादी प्रकाश मणि जी की याद तो ज्यादा ही आती ही है naturally. But in a couple of days, it's also Didi Manmohini's day too. 28 जुलाई जो है 2 दिन के बाद आने वाली है, वो दीदी मनमोहिनी जी ने जिस दिन शरीर छोड़ा था उसका दिन है. And Didi Manmohini was, I think, from my experience, the most powerful yogi I met in the yagya. दीदी मनमोहिनी जी माना पावरफुल यज्ञ के सबसे शक्तिशाली योगी है जिससे मैं मिला, जैसे मुझे अनुभव हुआ जब मैंने उनसे मिला. Once we brought one brother from England who was a scientist, and this brother had so many questions about their gyan. They were good questions. Okay. And we wondered what to do with him. So we took him to meet Didi Ji. एक बार एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट को ये मधुबन लेकर आए इंग्लैंड से, लंदन से, तो उनके मन में बहुत सारे ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. ये लोग सोचते रहे करूँ तो क्या करें हम, तो फिर इन्होंने उस भाई को मनमोहिनी दीदी के पास लेकर गए. And Didi Ji met him and gave him drishti for just 2 minutes. And in those 2 minutes, he had the experience of being a bodiless soul. Okay. And all his questions finished. Oh my God. तो जब वो साइंटिस्ट मनमोहिनी दीदी के सामने गया, दीदी ने उसको 2 मिनट की दृष्टि दी और वो एकदम अशरीरी हो गया और उसके सारे क्वेश्चंस समाप्त हो गए. When you sat in yoga, when Didi gave you drishti, you had such a feeling your third eye was just pulsating. She was such a powerful yogi.
ओके, तो जब भी हम लोग भी दीदी के सामने जाते थे, दीदी की दृष्टि मिलती थी, हम लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे तीसरा आंख हमारा खुल रहा है। इतना शक्तिशाली दीदी का योग था। But when Daddy Ji first, when she left the body, which is now, 13 years ago, you know, Baba, in all the messages, she gave her formula for perfection. Brahma Baba gave us the formula we all know, incorporeal, egoless, and viceless. Yeah. But time and again in all the messages after Daddy Ji left the body was self-respect and respect. That was like her formula to reach her highest stage. तो जब बड़ी दादी ने शरीर छोड़ा, जब भोग लगाए गए, जितने भी मैसेजेस आए, तो परफेक्शन का जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए 3 महामंत्र थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ऐसे ही बड़ी दादी के भी महामंत्र यही है, खुद के समान में रहो और सबको सम्मान दो, इससे हम संपूर्ण बन जाएंगे। There's one sister who lives in San Francisco, Chandruben. And Chandruben was telling us that she used to attend Daddy G's center in Bombay in the 1960s. ओके, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में चंद्रू दीदी रहते हैं। वो 1960s में, उन दिनों में जब बड़ी दादी बॉम्बे में रहते थे, तो वो सेंटर जाया करते थे, जाते थे सेंटर पर। And once she said she traveled to Madhaban on the train with Daddy G. And when they arrived at the station, they had 7 people, but only 6 sleeping berths. There was only 6 tickets for sleepers. And she was the youngest. She was only 15 years old. So they hopped on the train, and all of the sisters, including Daddy G, went to sleep in their bunks. And this sister sat up on top of the rice. They were taking some rice to give to Baba. And she sat in the middle of the seats. Okay. And in the middle of the night, Daddy G woke up at midnight and saw this sister sitting here. And this is 1968, 1 year before she became the head. She got out of her bunk and put this sister in her bunk. And Daddy G stayed up the whole night herself. So much surrender, so much humility, so much sacrifice Daddy G had. Yeah. तो 1968 की बात है, जब चंद्रू दीदी बड़ी दादी के साथ मधुबन आए ट्रेन में, तो लेकिन वहाँ पर 6 लोग थे, 7 लोग थे, लेकिन 6 ही कंफर्म टिकट थे उनके पास। तो जो चावल की बोरियां होती है, उसके ऊपर चंद्रू दीदी बैठ गए, जैसे भी एडजस्ट करके अपने को। फिर बड़ी दादी जब आधी रात को उठकर देखा कि ये तो ऐसी बैठी है, तो फिर इन्होंने चंद्रू दीदी को सुलाया और खुद दादी जैसे तैसे बैठकर पूरी रात निकाला। माना दादी में वो त्याग वृत्ति, दूसरों को कंफर्ट देने की वृत्ति बहुत ही हमने देखा है। Once I traveled right around the world with a film crew who made a film about Daddy, the 2 daddies, Daddy Janki and Daddy Prakashmani. And I was in New York, and we met a man called Dr. James Jonah, who was the Under Secretary General of the United Nations for Political Affairs. Okay. So at that time, it meant that he was meeting all the world leaders. At that time, the President of America, the President of Russia, etc. ओके, तो एक फिल्म बनाने वाली टीम के साथ वर्ल्ड टूर पर गए, जिन्होंने जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी के साथ फिल्म बनाई। वो न्यूयॉर्क में हम थे उस समय। एक व्यक्ति से मिले जो डॉक्टर जेम्स जोनस थे, यूएस, व्हाट वाज ही वाज Under Secretary General of the United Nations. ओके, अंडर सेक्रेटरी जनरल थे, या जो बहुत ही हाई पोजीशन वाले थे, अंडर सेक्रेटरी जनरल थे पॉलिटिकल अफेयर्स के अमेरिका में। तो उस व्यक्ति से ये मिले वहां पर। And we asked him, of all the leaders you've met in the world, who's the most impressive? And he said, Daddy Prakashmani. Okay. And he'd met Ronald Reagan, the President of America, Mikhail Gorbachev, the President of Russia. He had met Rajiv Gandhi. He'd met all of them. And he said Daddy Ji was the most impressive leader he had met.
तो उनसे पूछा गया कि इतने सारे लीडर से आप मिले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया से मिले हैं, अमेरिका से मिले हैं, राजीव गांधी से मिले हैं, कई लीडर से, वर्ल्ड लीडर से आप मिलते रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि मोस्ट इम्प्रेसिव लीडर जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो दादी प्रकाश मणि हैं. Yeah. And so, Daddy was a really extraordinary person. And I once traveled with her. I've traveled around America with her. I've traveled around Australia with her. And once I traveled from Madhaban to Bangalore in the train with Daddy Ji. तो इनको भी दादी के साथ टूर करने का मौका मिला, अमेरिका का टूर किया, ऑस्ट्रेलिया का किया, और एक बार मधुबन से बैंगलोर तक ट्रेन में दादी के साथ ट्रैवलिंग किया. And in the morning, Daddy Ji came into our cabin and she read us the Morley in English. तो मॉर्निंग के एक दिन सवेरे का टाइम था, दादी ये लोग जहाँ रहते थे ट्रैवलिंग के टाइम पे उस कैबिन में आए और इंग्लिश में इनको मुरली सुनाई. Daddy Ji was so flexible, so easy, so sweet. And, I was there when I heard she was sick. I flew straight to Madhaban just before she left the body. ओके, दादी बहुत ही नम्र थी, इजी नेचर वाली थी, बहुत मीठी थी. तो जब जस्ट बड़ी दादी का जब शरीर छोड़ने का टाइम था, थोड़ा टाइम के पहले ही मैं मधुबन पहुंच गया था. And when I arrived in Madhaban, I went to see Nirvebai, and he told me to go and see Daddy Ji. And she was lying in her room in Daddy Ji's cottage, but she was like not conscious, and she had all the machines, with her blood, testing her blood pressure, etc. Yeah, तो she was जैसे just lying very still. ओके, जैसे ही मधुबन पहुंचे, निर्वेर भाई से मिले, फिर निर्वेर भाई जी ने इनको कहा कि अब जाके मिलो बड़ी दादी से. तो जैसे मैं दादी कॉटेज में गया, मुझे ऐसा लग रहा था दादी तो जस्ट लेटी ही हुई है, इतना शरीर काम नहीं कर रहा था और बहुत सारी मशीन्स लगे हुए थे उनके शरीर पर. And then I went and I had breakfast, and I came back to Daddy Ji's room, and I was sitting there, and all the machines were fluctuating. I noticed, even though she was still, they were going, her blood pressure was like 180, 20, 140, was completely fluctuating. तो जब मैं नाश्ता करके वापस गया वहाँ पर दादी कॉटेज में, तो देखा दादी तो बस लेटी हुई है, लेकिन जो मशीन्स उनको लगे हुए थे उसमें बहुत सारी ऊपर नीचे हो रहे थे, बहुत सारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा था. तो ऐसे चेंजेस इन्होंने देखा वहाँ पर. Yeah. Then I went outside again, and I had to do something. And when I came back, I noticed all the seniors were coming rushing into Daddy Ji's cottage. And that was like, Daddy Manohar Indra, Daddy Ratan Mahini, Ramesh Bhai, Brijmohan Bhai, they're all rushing. So I also went, and we went into her room. And when I looked at the machines said 0, 0, 0, 0. Daddy Ji had just flown from her body. ओके, तो फिर इनको लगा कि सब दादी की तरफ भाग रहे हैं, कुछ तो ऊपर नीचे बात चल रही है. उस समय जैसे मनोहर दादी, रतन मोहिनी दादी जी, रमेश भाई जी, सब दादी के पास भागने लगे. तो ये भी वहां पर जाके देखा, तो उनको जो भी मशीन्स अटैच किया गया था उसमें सब रीडिंग जैसे 0, 0, 0, 0 होने लगा और दादी वतन में उड़ गई. I'll never forget the atmosphere in that room. On one side, there was Daddy Janki, Daddy Gulzar, all the senior sisters, Little Mahini, Muni Ben. On the other side, Ramesh Bhai, Brijmohan Bhai, Nirveer Bhai. Everyone was in the room, and there was just this incredible vibration. I felt it was like an angel had been born. Yeah, had been born. तो उस समय उस रूम का जो वातावरण था कभी भूल नहीं पाते हैं. उस समय जानकी दादी, गुलजार दादी, सब दादियाँ, सब बड़े भाई वहाँ पर उपस्थित थे. इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे एक फरिश्ते का अभी अभी जन्म हुआ है. Yes, and and I remember we just stood in silence for 10 minutes or so, and the first person to leave was Daddy Janki.
And I always remember her face. It looked very serious. तो 10 मिनट तक ये लोग योग करते रहे। उसके बाद इनको याद है कि जानकी दादी ने पहले उस कमरे से दादी बाहर आई और दादी का चेहरा बहुत ही उदास था। But you know, this is Shiv Baba's yagya, and no matter what happens, it's Shiv Baba who's always guiding this organization. हम सब भी जानते हैं शिव बाबा का यज्ञ है, कुछ भी हो जाए हमको गाइड करने वाला बाबा ही है। Now, I've been talking for a long time, and I'm just wondering if anyone, you know, would like to ask a question or make a comment. We have a few minutes left. If anyone would like to say something. किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ प्रश्न है, पूछ सकते हैं। अब अनम्यूट करें आप। कुछ कहना है डॉक्टर साहब, अनम्यूट करो। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव आपने बताया, हर प्रकार का अनुभव बताया, और लव जो है वो सबसे मुख्य है। ये बात भी आप फील कर रहे हो और हम सबको भी फील करा रहे हो आपके लवफुल चेहरे से। You shared very beautiful things, especially about Baba's love, you know, how important it is, and we can feel that Baba's love from your face right now. Thank you, Dr. Jayant. दूसरी बात जो आपने बताई कि कैसे बाबा एक्सेप्शनली कभी-कभी दूसरी जगह पर भी आते हैं, जैसे कि भाई के लिए बाबा वहां पर भी फॉरेन में भी आए। ऐसा ही एक इवेंट हमने भी देखा है जब हमारी बाल ब्रह्मचारी भाइयों की भट्टी थी माउंट आबू में। उस समय गुलजार दादी नहीं थी, हर भट्टी में गुलजार दादी थी और बाबा आते थे, लेकिन हमारे वक्त में गुलजार दादी दिल्ली थे, तो वो यहाँ नहीं थे। हमने रिक्वेस्ट किया बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को कि बाबा हमारे समय आने चाहिए। डॉक्टर साहब ट्रांसलेट करने दो। So you know what happened, like you shared, no, Baba came in London as an exceptional case, so he also had such one experience where there was a bhatti going on in Pandav Bhavan, and Baba used to come very often in those days in all the retreats. So but Gulzar Dadi wasn't there, she was in Delhi, and they requested Manmohini Didi that Didi Baba should come. जी बताइए। मनमोहिनी दीदी जो थी तो वो तो स्ट्रिक्ट थी, वो कहती है कि अभी तो गुलजार दादी वहाँ है, कैसे आ सकते हैं। Then Didi told them that, you know, Didi was very strict, Manmohini Didi, so she told them that Gulzar Dadi is in Delhi, how can Baba come? तो फिर हमने नम्र होके बात छोड़ दी। Then I thought, okay, I'll just leave this matter, and he left it. He didn't think about it again. Then हम जब भोग लगाने के लिए, भोग का दिन था, गुरुवार था उस टाइम, तो भोग लगाने के लिए मोहिनी बेन गए ट्रांस में। So it was a Thursday, so Mohini Behan went into trance to offer bhog to Baba. मैं सबसे आगे बैठा था, I was sitting बाजू in the front. में बड़ी दीदी बैठी थी, And Badi Didi was कुमार there. का दादी भी बैठे थे, Kumar ka Dadi was also there. और अचानक जो मोहिनी बेन गए तो वापस बाबा आए उनके तन में। How he experienced as if, you know, Baba came in Mohini Didi's chariot. बड़ी दीदी बाजू में ही बैठे थे। मैंने कहा बाबा आए ना, तो बड़ी दीदी ने कहा हाँ आ गए। So he asked Manmohini Didi, Didi, Baba came, isn't it? Then she said, yes, yeah, Baba came. तो बाबा आके 7-8 मिनट तक मेडिटेशन कराया, दृष्टि दी, दृष्टि से और चेहरे से मालूम ही पड़ गया कि ये बाबा आए। हाँ, Baba came for 7 or 8 minutes or so. He came and just gave drishti, and with that drishti we could able to experience that Bap Dada came.
दृष्टि और चेहरा, फेस And the फेस से face भी. also. Yeah, through the face also. Also we were very happy. तो क्योंकि एक्सेप्शनली ये होता है ना, तो ज्यादा बाबा के प्रति प्यार जाता है कि बाबा ने देखो हमारा कितना ध्यान रखा. Yeah, जो so he हमको भी felt प्लीज very कर दिया happy that सबको. Baba listened to the request and Baba came and he was very happy. हम 13 कपल्स थे, बाल ब्रह्मचारी कपल्स. So there were 13 yugals, but they were following purity since a very young age. But like Bal Brahmachari, they were pure, but somehow they got married, but they were pure. Like that, 13 Baba yugals were there in front of Baba. सुंदरी बहन और अपने सब मेन कपल्स थे साथ में सब. All main couples of the yagya, they were there at the time. Yeah. Thank you. That's lovely. Jatin bhai. Is there any? Yes, Manish, yes. bhai? Yes, hello. Hello, Brother Charlie. Om Shanti. Om Shanti. I am very happy with love and respect. I know about love and respect. But I am clear in respect quality. But one said you for about love. Love for self makes ego. Could you explain in this matter? How? Yeah. Yeah, thank you so much. When I love myself as a body, yes, that becomes ego. But when I love myself as a soul, it becomes self-respect. Okay. Actually, it's a love. Our soul means okay. It's we are okay. And good. Thanks. And second thing, I knew knowledge about Prakash Mani is a leader, is a motivator, leader of the world. You found physically, but could not found I as the personality on this world as a leader. Can you say me for in Brahmin now and at this age in this presence, who is the most personality for the as a leader in this in our Brahmin life, Brahmin family? Yeah. I could not. Yeah. It's an interesting question, Brother Charlie. Difficult also. So who do I admire as a leader in the Brahman family? It's Is that not the whom question? you admire. In general, he's asking, I think. Yeah. I think that there's so many sisters, so many that I feel have, when the soul really lives Baba's knowledge and practices Baba's knowledge. And so for me, there's people like Sister Jenti. I know her extremely well for 45 years. Sister Mahini in New York also. I was supposed to be in America now, actually, but because of COVID, I couldn't go. Okay. Sister Santosh in Bombay, Sister Asha in Delhi. So many really have the spiritual qualifications to be high quality leaders. Yeah. Okay. I remember Asha Didi or she had. I feel sometimes is means a role model for mine as you remembered me. Okay, and Jayanti Didi is also okay. Thanks and good. Next time we have in the future. Thanks, sir. But the beauty in this divine family is that Shiv Baba is our leader. Yeah, exactly. These are all instruments, and they're wonderful instruments, but no matter who comes or who goes, the yajna is created by Shiv Baba, and it will continue until we all go home. This is Shiv Baba's creation. Yeah, माना कुछ भी हो जाए, ये जो यज्ञ है इसको बाबा ने रचा है. जब तक हम घर वापस ना जाए, इसकी जिम्मेवारी बाबा की है, और वो जो बाबा का कार्य है, बाबा अपने निमित्त बच्चों द्वारा कराएगा. Whenever non-Hindi speakers come, like you, she provides translation services for this group. But
she do not provide only translation, but every experience she enjoys. So this is the main thing. She enjoy very nicely. Okay. So we are also thankful to Savita Ben and especially for Charlie Bhai. Okay, भाई डॉक्टर साहब और कुछ कहना है? कभी उन दोनों के लिए बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से हाथ खड़ा करके थैंक्स. They are expressing their thanks like this. Can you see all Thank of you them? so much. Yeah. Thank you, Savita Ben. Thank Thanks, you, Brother Dr. Ben. Charlie. Yeah. Thank you, Manesh Bhai. Lots of love. Lots of love. See you. Bye. बड़ौदा आना है, Bye-bye. बड़ौदा आपको आना है. बड़ौदा देखा है You have to आपने? come and visit Baroda. That's what he's telling. I will come. I will come. He said Okay. he'll come. Yeah. Thank you, family. Thank you. Om Om Shanti. Shanti. Thank you so Om much. Om Shanti. Shanti. Okay, let's meditate for 2 minutes, brother. Yes. Yeah, 2 minutes. Yeah, 2 minutes in silence and कराइए, मेडिटेशन Please कराइए. recite to all and for 2 minutes and then we will finish. Okay. My heart, my sweet home, I long